Yes, Ayush. Okay. So after this, so I'm just loading the website. Okay. So now you can see. So in the previous class, we have import this template. Then in today's class, we have learned all about that how to edit the template, how to edit your front page, like how to remove your logo. You can see organic store logo is here. So how to customize this logo and how to remove this logo. Then yes, please. Okay. So moving, I'm just scrolling down. Then you can see this image. Then this text on the right hand side, best quality products, join the organic movement, right? So how to edit this all, like these all content, how to remove this image, like how to replace this image with another one. Then scroll it down. Then you can see free shipping option is there, certified organic. So how to edit this content, how to put your content in place of this content. So in today's class, we will learn all about this. Okay. So from the top of the page, we can start from this header section. Okay. So your first step is that you have to log in first into your WordPress dashboard, right? So only that way you can like आपको WordPress पे login करना है सबसे पहले, तभी आप इसको editing कर सकते हैं अपनी website को. Okay. So make sure you have to log in first into your WordPress account. Now simply after login, you have to like load your complete website from here. You can see yoga tutor. Under yoga tutor, visit site option is there. So simply click on this visit store, so that your website is being completely like loaded. And now you can see this black strip is there, right? This black strip, uh, yoga tutor is there, customize option is there. Then the option is it is like a update option. Like if you receive any kind of a update from your WordPress panel, then you have like a notification icons comes here. Okay. Then this is the sign of a like comment section. Okay. Then new, from this option, if you want to create a post, if you want to add a media, like if you want to insert a image, if you want to insert a YouTube video, then this is the like option. From here you can upload your content into your website. Then page section, landing page is there, template, product, order, coupon, and user. Okay. Then edit page option is there. Then edit with Elementor option is there. Okay. So in our first session, we have to cover like how to edit our header and footer section. Header section is this one. You can see organic store, home, all products, about, contact, and account. And when I scroll it down, then you can see. Hello. Yes, please. చెప్తా ఇప్పుడే చెప్తా. Okay. So when I scroll it down, then you can see footer section is there, organic store. On the left hand side, you can see organic store logo is there. Then it's like text button is there. Like this text is also editable. हिमांशु यादव जी, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए, बैकग्राउंड से काफी नॉइस आ रहा है. Okay. So
Okay, so we can start from the top section. Now you can see a black strip is there. When you are logged in into your WordPress account, then please load your website. After loading the complete website, then you can see this black strip is there. In this strip, yoga tutor is there, like it's your site title. Then customize option is there. Then new edit page and edit with Elementor, right? So if you want to edit in a header section, if you want to editing in header section, so you have to click on this customize button, right? So please note down on a paper, like how to edit your header. So click on the option. పంపించాను SMS చేశాను. Guys, please continue. Okay, so click on the option. The option is like customize option, right? So when I click on the option customize, then a screen comes and a screen load. Yes, so you can see screen is completely loaded, and when I scroll it down, yes, so complete page, your complete page is loaded. Now you can see on the left hand side, you can see multiple options are there: global, header builder, breadcrumb, blog, sidebar, footer builder, performance, WooCommerce, menus, widget, homepage setting, and additional CSS. Okay, so we have to edit our header, like our header section first. So you can see the when I hover over in a like header section, then you can see like this is a pencil but icon is there. So when I click on this pencil icon, okay, so when I click on this pencil icon, then you can see on the left hand side, you can see logo, select image option is available. Okay, okay, so now I'm just showing you like from the top, global option is there. Okay, so when I click on the global option, then you can see many options are available, like base typography. If you want to change the like this text or order of this text, and if you want to change the font family of the website, then you also can from this option. Okay, so open sense is there. When I change it to the folio script, then you can see a page loads again. Yeah, so you can see join the under join the organic movement, it is like a description area. So the description area, text in the description area is completely changed. Okay, so you can change it from this option, body font family. Then scroll it down and you can see size. If you want to change the size of the text, so you also can change it from here. Okay, but we can change it later from the Elementor plugin. Going to back, then I'm going for the logo option. So you have to click on the header builder button. Then when you click on header builder, these are three options available. So, first is site identity and logo, right? So you have to click on the site identity and logo option, then scroll it down. Then you have two buttons over there, remove option and change your logo option. Okay, so if you want to remove your logo, so simply click on the remove button. Yes, so now in the right section, you can see your logo is completely removed, right? And in case if you want to change it from a different image, so click on this select logo button, then click on media library. Okay, so if you want to change this logo from this one, replace this logo from this one. So when I click on this and click on select, then it asks you that use your original logo, and if you want to crop the image, you also can crop this image. So I'm click on skip cropping option. Yes, so you can see, so our logo is completely changed now. Then logo width option is there, like your logo width is 155 pixels. Okay, so if you want to decrease the size, so you also can, like in place of 155 you can use 140. Okay, so you can see your logo is like your logo size is reduced.
then you have an option of display site title. Okay, under logo, if you want to display your content of your like the site, like title of your website, so you also can enable this option from here. Yeah, so you can see our site title is Yoga Tutor, and under the logo you can see Yoga Tutor option is there. Okay, so in the left portion, after making all the changes, you have to click on the publish button. You can see a blue button is over there. You have to click on the publish button from here. So like in the previous mode of our website, you can see the logo is organic store, and when we publish it, and when I reload this website again, so you can see the live changes. Okay, yeah, so you can see your logo is completely changed, and your site title is Yoga Tutor. Okay, so for now I'm removing site title. Yes. Okay, so you also can reduce the size from this bar. Yes. Okay, then your logo option is complete from here. Now move toward my menu icons. Okay, so you have to click on the this pencil icon. When you hover over the menu, then you have to click on the this pencil icon. Then in the left portion, you can see general option is there, submenu width. Submenu is basically under account. You can see a completely like a complete white box. My account and cart. This is your submenu part, and this is your main menu. Okay, so I'm going to design button and menu hover style. Okay, so when I hover on this menu, so nothing is happened, right? When I select animation from here, zoom in. Okay, so I applied a zoom in option from here. Then just a second. Yes, submenu animations. Okay, slide down. Yes, I think the all changes are appear when I publish the page. Okay, so now move like when I scroll it down, then a menu color option is there. Now you can see your menus button is green. When I hover like regular is black, or when I hover over the menu, then you can see it automatically greens, like it's a hover effect. So if you want to change this color from green to, like if you want to change it from a red color, so you also can. Yes, red and this. Okay, just a second. Background, menu font, menu spacing, margin, then background color, menu color. Okay, I'm just like publishing the page. Now if I reload my website, okay, so it like animation is applied. You can see zoom in animation is there, but I changed the color, but it's not visible. Just a second. Last week was the exam. Hmm.
Okay, so as for now, I'm just publishing. We can change it later. Okay. So these are all the options. So if you want to customize your menu and if you want to change your logo, so these are all options available here. Okay. So after changing the logo and after putting various types of animation in your primary menu, then you have to click on the publish button. And so now moving toward header section, oh sorry, footer section. Okay, so how to edit this area? It's a footer area. Okay, yes, so scroll it down at the bottom of the page. Then you have to click on the this pencil icon if you want to remove the background, if you want to change the background color. Okay, so click on the pencil icon and click on the design option. Yes, so now you can see like it's a bluish color, dark bluish color. Okay, so if you want to change the color, so at the right side you can see, yes, you can see right section. If you want to change the color, so you also can change it from here. Okay, so I'm just selecting this one. I think blue one. Yes. Okay, so यहाँ से आप यहाँ background का color change कर सकते हैं. Then hover over this logo. Then click on this pencil icon. Okay, then in the left portion you can see image is loaded, this image. Okay, so we have to replace this image from our new logo. So click on replace and select this, click on add to widget. Okay, so you can see in the right section you can see logo is completely changed. Then scroll it down and click on this text button. Right, so you can see text button is editing section is available. Then if you want to type it from like a newer text, so you also can. I'm just typing. We are provide yoga classes for free. Okay, so you also can add like आप अपने according text को यहाँ पे add कर सकते हैं. ठीक है. Then right section पे आप देख सकते हैं, click on this text icon, like download our mobile app. So if you want to change this text, you also can. Connect with us. Okay, then the text option available is text option is available. If you want to change this text, you also can change. Okay, then this image option is there, get it on Google Play and available on App Store. If you want to change it, then you also can click on this pencil icon. Then you can see it's an image, like get it on Google Play and available on the App Store is basically 2 images. If you want to change the image, you also can. The option available is the option is available from here. Then go to the bottom part. Okay, like black background, click on this pencil icon. Yes, click on this. Then if you want to change the copyright text, okay, so you also can change it from here. like यहाँ पे मैं लिख देता हूँ online yoga classes. Okay, so you can see in the bottom portion you can see the text is replaced. Then
On the right portion, you can see various types of your social icons is there. So click on this pencil icon. Then if you want to remove like a particular icon from here, you also can remove. Just click on this cross button. Okay, if you want to add a new one, you also can you can see the section. If you want to add a like WhatsApp, okay, so I'm selecting WhatsApp, then click on add social icon. Yes, so you can see WhatsApp is added. And if you want to change the alignment, you also can. Like this is the option: middle alignment, left alignment, then right alignment. Okay, so यहाँ से मैं इसे भाई publish कर देता हूँ. Click on publish and reload the website again. Okay, so you can see all the changes in the bottom part, in the footer part. Okay, so यहाँ से आप एडिटिंग कर सकते हैं. आपको अपना हेडर में एडिटिंग करना है, फुटर में एडिटिंग करना है. ओके, सो यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. While we are doing these changes, would it show to the public as it's under construction? No. Like if you want to customize your website, like हमने क्या किया है, अभी हमने अपनी एक वेबसाइट की टेम्पलेट जो रेडीमेड थी, वहां पे सारा डमी कंटेंट था, हमने उसे इंपोर्ट किया है, राइट. सो नाउ वी हैव टू पुट आवर कंटेंट. ओके, सो मैं ये जस्ट आपको ये ऑप्शंस मिल रहे हैं यहाँ पे, लाइक हाउ टू चेंज. जैसे आपका लोगो है आपके पास, सो आपको अपना लोगो लगाना है वहां पे, तो आप कैसे लगाएंगे? तो दीज आर द ऑप्शंस, लाइक हाउ टू edit your website, how to edit your website content, how to change your logo, how to change your text area. Okay, so वो आपको कैसे करना है? So these are the options. Jeshua ma'am, what is there actually? So this was a template which was being brought in as an standard template, and this was a demo template, and now we just wanted to have this demo template, and after that we now are requiring Personalizing it. You're personalizing yes, it. I got that. customization. Yeah. Yes. So No, what now- I'm trying to understand is, Yeah. like already once the website is ready and then I want to make changes in the back end. This is the back end, right? Yeah. So while I'm making changes, does it show to the public that it's under construction? Or I can simultaneously make the changes and it just uploads to the customers also? Very good question. So you have asked, once you have uploaded the theme, and in case you clicked on publish button, which is on the top, when you clicked on publish button, then your backend has gone to the front end. And until and unless you work in the backend and you do not click on publish and you save your work, then your work gets saved, and whatever is on your front end, that will remain continued to be displayed to the people, to the visitor. But once you publish your work, then your changes will start displaying to the people. So somebody browse this, then your changes will be visible there. So, and in case you are going to create your website first time, and then you have put over there one banner that website is under construction, and you are working in the backend, then that template will remain over there. It will be visible that website is under construction and you are working in the backend. Once you completed your backend work and you click on publish, it will go to the people, and that template will be removed from there. That will be replaced by your work. So that's the thing. Now, I'm just putting little more clarity about your question. So when you are working here, so by default, it will not come over there that the website is under construction. By default, if you have downloaded a template and clicked on publish, then this demo template, which has data of somebody else, will be displayed over there. So whenever you download your template, and at that time you
just have to put your content. You have to personalize with your data. Just put your logo, your images, your content over there, and then only click on publish button. Otherwise, you can put website is under construction post over there. I think it is clear to you now. Yes, yes, it is. Thank you. Okay, welcome. Yes, Ayush, please continue. Okay, so I think now header and footer is complete. So header and footer is completed from your side, Ayush. I would like to ask from all 7-8 people who are in this room that whether you are able to do this exercise at your end. Can you do independently header designing and footer designing? So we have covered almost everything, foundation making exercise. So how much comfortable you are that you can do it independently yourself, or you are doing it at your end? Whatever exercise we have done so far, except this header and footer, in case you are comfortable doing this, please put in the chat box that you are comfortable. And header and footer, in case you could understand here, then please put you only. And in case you do not understand or you could not understand, then please write repeat here, because it's a complete technical session and just demonstration one time is not enough to you to understand these things. Whenever you will do this at your end, you will stuck somewhere. So please put in the chat box whether you are through or you want to repeat something in header and footer. Then Ayush will repeat it. We have no hurry. We are not in hurry. We do not want to close this session in hurry. We want to make you learn. So please put in the chat box what's your status. Could you be able to do these exercises yourself, or have you taken your domain or hosting, or are you doing this exercise at your own end? Then please put in the chat box what is your opinion, or you can open your mic also. You are free. Then we will go ahead. आयुष जी सर. सर मुझे ये पूछना है, जो हेडर एंड फुटर है वो तो मैंने कस्टमाइज कर दिया था, लेकिन इसमें एक मुझे डाउट, मतलब एक ये आ रहा है प्रॉब्लम कि जैसे आप ये मेनूज में जो आप सब मेनू बनाते हैं और वो सब मेनू का जो पेजेस है वो टेम्पलेट उसको कैसे अप्लाई होगा? ओके, सो सर आप उसके लिए एक काम कर सकते हैं. एक सर प्लगइन होता है डुप्लीकेट पेज का. ओके, ठीक है. वो क्या करेगा बेसिकली, आप अगर एक न्यू पेज को क्रिएट करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, वो टेम्पलेट नहीं होगा, वो एक बेसिक पेज होगा आपका. ओके, सो आपको क्या करना है, एक प्लगइन को डाउनलोड करना है. प्लगइन का नाम है सर डुप्लीकेट पेज. ओके, सो आपको प्लगइन को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, एक्टिवेट करना है. देन आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको जो पेज चाहिए, आपको एक्स्ट्रा पेज चाहिए, वो किस तरीके का है. राइट, सो आप सेम उसी पेज का एक डुप्लीकेट बना लीजिए. देन यू कैन एडिट ऑल द ऑप्शन. आपको वहां पे सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे एडिट करने के. ओके, लेकिन ये जो अपन सब मेनू को टाइप करते हैं, उसको टाइटल नेम देते हैं, तो उसको क्या नीचे ही वो ऑप्शन आता है क्या कि पेज आपने को वो अप्लाई करना है डुप्लीकेट? नहीं, सिंपल सर, बिल्कुल. आपको सब मेन्यू भी क्या है, जैसे सर आपका ये मेन मेन्यू है, ऐसे ही आपके सब मेन्यू है. ओके, जैसे अकाउंट है, माय अकाउंट है, ये माय अकाउंट. हाँ हाँ, जैसे ये कार्ट है, बताइए. कार्ट को कौन सा टेम्पलेट अप्लाई होगा? नहीं, कार्ट सर कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जो प्लगइन के लाइक बाय डिफॉल्ट क्रिएट होते हैं प्लगइन से. अब जैसे ये अकाउंट है और कार्ट है, ये आपका वूकॉमर्स प्लगइन से बाय डिफॉल्ट क्रिएट है. ओके, सो इसको एडिट अगर आपको करना है तो आपको मे बी वूकॉमर्स का पेड प्लगइन लेना पड़ेगा या कुछ एड ऑन्स प्लगइन करने पड़ेंगे आपको इस्तेमाल पेड, अगर आपको इस वाले सेक्शन में एडिट करना है तो. बट अगर आपको बेसिक पेज में एडिट करना है, जैसे होम का पेज है, अबाउट का है, कॉन्टेक्ट्स का है, सो उस प्लगइन से आप वो कर सकते हो सर. वो आपका प्लगइन क्लोन करके दे देगा आपको. देन आप वहां पे अपना कंटेंट उसे डाल के आप उसे अलाइन कर सकते हैं. जी ठीक है. ओके सर, क्लियर है? यस यस, ओके. ठीक है. सो नाउ वी आर गोइंग टू edit the middle section, right? The section in between your header and footer, this section. Okay, join the organic movement. Then you can see 1 2 3 4 boxes are there. Then best selling products,
Okay, so these products are like if you want to add a new product in place of this product, so you also can this can be done by WordPress dashboard products, like in the product section. Okay, so first of all we are going to open this editing section. Okay, in middle editing section. Okay, so I'm closing this one. Yes, so Ayushi, before you close, sorry. yes, please बताइए. Uh, so you already closed it. I had one question that home and about those names, if I can make changes in those names. Yes, you also can. Just a second, I'm loading. Okay. Yes, so like it's a home page. Like these are basically pages. Okay, so you have to change the name of your page, so automatically it will change the it on a home screen. Okay, I'm just showing you when I go to the all pages. So now you can see about section. Okay, contact section, home section, sample section, show. Okay, so take this one. Okay, so I'm just click on quick edit. So Events. okay, so in place of home, so आप मुझे बता दीजिए कौन सा रखें यहाँ पे. Events. Events. Okay, so click on slug is like automatically changed, then click on the update button. Yes, so home is now so when I load the website, now you can see events. Yes, thank Is you. it okay, ma'am? Yes. Okay, so now we are going to edit the middle section, right? So first of all you have to complete reload your website. Okay, and make sure you have to log in your WordPress account first. So now यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, ब्लैक स्ट्रिप आपको यहाँ पे दिखाई देगी. Okay, so yoga tutor option is available, customize option is available. So if you want to make changes in your header and footer section, you have to click on the customize button. Then moving ahead, new, edit page, and edit with Elementor, right? So if you want to make any changes in your any of your website pages, so you have to click on this button, edit with Elementor. Okay, so I'm going to click on this button, edit with Elementor. So it will take a few seconds to completely load the page. और एडिट पेज में जाएंगे तो वो सिर्फ पेज ही होगा क्या? या एग्जैक्टली सर, एडिट पेज में जाएंगे तो वो पेज का सर सेक्शन आपका यहाँ पे देखिए, जैसे इवेंट्स का ये है, एडिट पे मैं अगर क्लिक करूंगा यहाँ से, तो ये पेज का लेआउट सर बेसिकली एडजस्ट करने के लिए बताएगा. लाइक इफ यू वांट टू ऐड अ साइड बार इन योर होम पेज, सो यू आल्सो कैन ऐड. ओके, तो बेसिकली इसका जरूरत नहीं पड़ेगा आपको. अगर आपने टेम्पलेट को इंपोर्ट किया है और वो टेम्पलेट एडिट विद एलिमेंटर से यूज हो रहा है, तो आपको एडिट पेज का जरूरत ही नहीं पड़ेगा सर. आपको हमेशा एडिट विद एलिमेंटर का यूज पड़ेगा. ठीक है. ओके. Yes, so now you can see a page is completely loaded, and when I hover on a particular element, now you can see all options are editable. Okay, so you can see this pencil icon is there. So when I click on this, then you can see left portion. If you want to change the image, in place of this image, if you want to add a new image, click on this button. Now if you want to like if you have an image saved in your local computer, you also can use that image. Okay, so click on upload files, then click on select files, then you can see image is loaded into your system. So if you want to add a image from your system, you also can. Like I'm just choosing this image. Okay, so click on insert video. Now you can see image is completely changed, right? So
left in the left section, we are like we have changed our image. So moving toward right section, click on this pencil icon. Then if you want to change this like this plant image, you also can. Then if you want to change the best quality products text, then click on this pencil icon, and you can see on the left section you can see best quality products is there. So if you want to edit this text, you also can type your own text in place of this. Okay, now I'm going to change this one, the join the organic movement. Okay, so I'm going to type join our live classes now. Okay, so आयुष जी, the text, जी sir. यहाँ पे जो अपन ने इमेज चेंज की थी, तो मुझे एक यहाँ पे दिक्कत आती है कि ये जो इमेज का जो साइज है या पिक्सल है, उसको कस्टम करेंगे या नहीं करेंगे, तो फिर वो एक्चुअल साइज का इमेज पहले तो ऑलरेडी जो डिफॉल्ट में है वो कौन सा साइज है, वो कैसे समझ में आएगा, और हाँ, अपन सर, को जो अपलोड करना है वो थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा आप ये करिए। जी सर, देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर देखो, अगर आपके पास आपने कोई टेम्पलेट इंपोर्ट किया है तो वहां पे कुछ डमी इमेजेस पहले से क्रिएट होती हैं, ठीक है। तो बेटर ये रहेगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो डमी इमेजेस वहां पर ऑलरेडी लगी हुई हैं उनके साइज को आपको चेक करना है, राइट। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट लाइक हाउ टू चेक द साइज ऑफ अ इमेज। ओके, सो क्लिक ऑन दिस बटन, देन क्लिक ऑन दिस इमेज, सो गोइंग डाउन, yes, I think this, no, I think this image is, so when you click on the image, so on the right hand side you can see image pixels. Okay, you can see 1000 by 1000, right? So if you want to replace the image for a newer like if you want to replace this image to a newer one, so make sure आप जो आपकी न्यू इमेज होगी, मेक श्योर आप उसका साइज 1000:1000 रख लें, राइट सर। सो क्या होगा अगर आप, हाँ बिल्कुल सर, पिक्सेल्स वेबसाइट है, वहां से आप इसे साइज को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैं एक बार ओपन कर देता हूँ pixels.com। ओके, सो मैं यहाँ से कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ, लाइक हर्बल प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो मैं कोई भी इमेज यहाँ से ये ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिया। सो in the right section you can see free download and custom size option is there, right sir? So select the custom size and type your own size, 1000:1000। I think ये इमेज वर्टिकली है, सो यहाँ से हम कोई ये वाला इमेज ले लेते हैं। ओके, ये वाला इमेज ले लेते हैं हम यहाँ से, देन select the size 1000:1000। okay, so click on the free download button. Yes, so image is completely downloaded, and how to insert this image? Okay, so click on this pencil icon, then in the left section click on this image, click on upload files, select files, and I'm going to import this one, open, then insert media. Yes, okay sir, is it clear? ओके सर, यस, ठीक है। सो यहाँ से आप मेक श्योर कर लें जो आपका टेम्पलेट है वहां पे जो भी साइज है पहले से इमेज का, वो साइज को आप रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा, राइट। नहीं तो आपको साइज का काफी प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि वो लेआउट आपका बिगड़ जाएगा, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू एडिट दिस सेक्शन। ओके, सो क्लिक एडिट बटन। सो आप यहाँ पे अपना कोई भी टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, देन गोइंग टू दिस बटन शॉप नाउ। Okay, so if you want to change like shop now, so click on this pencil icon, then see in the left section shop now, if you want to replace it from book now, book now। okay, so आप देख सकते हैं राइट साइड पे जो भी हम चेंज कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे, वो राइट साइड पर यहाँ पे विजिबल है। okay, then if you want to link this button to a particular page, you also can link। okay, so I'm going to link this page।
A1 dot people. Okay. So I'm going to link this button to our all products page. Okay, so copy this link, click on the copy, then you can see type is default, then book now button, then you can see a link option is available. So you have to copy your particular page link from like reloading like आपको जो भी पेज को कॉपी करना है आप उसे पेज को लोड कर लीजिए, देन यू हैव टू कॉपी द लिंक फ्रॉम द गूगल क्रोम टैब and you have to paste it this. Okay, so यहाँ पे हमने लिंक लगा दिया अभी, तो हम इसे बाद में पब्लिश करने के बाद देखेंगे ये हमें कहाँ पर लेके जाता है. Okay, so scroll it down and now this option is available. So you also can change this text. Click on the icon, then you can see यहाँ पे एक व्हीकल का कोई ईमेल आइकन है. सो आप यहाँ से ये भी चेंज कर सकते हैं. ये देखिए काफी सारे आइकन है, जैसे अभी यहाँ पे ये वाला व्हीकल है, इसके जगह पे मुझे दूसरा लेना है, सो मैंने ये वाला ले लिया. देन क्लिक ऑन इंसर्ट. ओके, सो आप देख सकते हैं ये चेंज हो गया यहाँ पे. देन फ्री शिपिंग, सो इफ यू वांट टू चेंज दिस फ्री शिपिंग यू आल्सो कैन. ओके, सो सेम है आपका, ये सेकंड ऑप्शन भी सेम है आपका. ये जो अभी जो ब्लैक स्ट्रिप है ना उसके ऊपर जो एक प्लस और 6 डॉट और एक एरो दिखा रहा है, हाँ उसका थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे वो किस लिए है वो. हाँ ठीक है. ये बेसिकली क्या होता है, अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने एक टेम्पलेट चूज किया है, हम उसी के अंदर एडिटिंग कर रहे हैं, राइट. ये ऑप्शन इसीलिए आपको दिया है, लाइक इफ यू वांट टू add your own template, if you want to add your own designing section, right, so you also can add from here. So click on the plus icon, then it will ask you to select a proper layout. Okay, so like यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक लेआउट ये दिख रहा है 1 and 2. so page is divided into 2 sections there. Okay, so you can select the page layout from here. like मैं यहाँ पे चूज करता हूँ 3 वाला, तो मैंने क्लिक किया 3 पे. Now you can see 3 boxes are available, first, second and third. So if you want to like make your own template, if you want to add your like own designing, right, so you also can. like मैं यहाँ पे एक text रख देता हूँ, just drag it and drop it here. Okay, then text editor इसके नीचे यहाँ पे, ठीक है. देन सेकंड सेक्शन में मुझे क्या करना है, मुझे एक इमेज को लगाना है, तो मैं यहाँ से इमेज को ड्रैग करूंगा एंड ड्रॉप इट हियर, राइट. देन यहाँ पे फाइनल सेक्शन आपका रहता है. यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर मुझे यहाँ पे एक बटन लगाना है तो मैं यहाँ पे बटन को ड्रैग करूंगा एंड ड्रॉप इट हियर. ओके, सो यहाँ से आप अलाइनमेंट कर सकते हैं बटन का, यहाँ से लिंक कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं. जैसे मैं बुक नाउ कर देता हूँ, बुक नाउ. ओके, सो यहाँ पे मैं कोई इमेज ऐड कर देता हूँ अभी के लिए. इमेज सेक्शन पे मैं गया, ये वाली इमेज को मैंने इंसर्ट कर. ओके सर, क्लियर है. ये बेसिकली क्या होता है, अगर आपको अपना कुछ कंटेंट ऐड करना है, आपको लगता है कि आप अपने अकॉर्डिंग अपना डिजाइनिंग करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ से अवेलेबल मिलता है. ठीक है जी सर, क्लियर है. ओके, ठीक है. अभी ये देखिए, ये बुक नाउ का बटन है ना, टॉप पे है. अगर मुझे इसे मिड में लाना है या बॉटम पे लाना है, तो वो आप कैसे लाएंगे. ओके, so click on this pencil icon and going to the advanced section. Okay, so in the advanced section you can see margin is there, padding is there. Okay, so आप margin दे दीजिए इसे टॉप से like 50 का. ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड में चेंजेस. so मैं 100 का मार्जिन देता हूँ, so ये मिड में आ गया. ठीक है, so ये करने के बाद में यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ कुछ, कोई भी अपना टेक्स्ट. ओके, देन यहाँ पे भी आपको कोई टेक्स्ट लिखना लिख सकते हैं. देन हम यहाँ पे आ जाते हैं बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स. सो इफ यू वांट टू एडिट दिस बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, आप यहाँ पे लिख सकते हैं फीचर्ड प्रोडक्ट, फीचर्ड प्रोडक्ट्स. ओके,
So scroll it down, then this section. Yes. So now you can see these products like assorted coffee, hand sanitizer. Okay. So these products are like यहाँ से ये आपका edit नहीं होंगे. Okay. So if you want to change this image, if you want to change your product, so going back to the WordPress dashboard, then you can change these products from this section, product section. Okay. So when I click on the products and click on this all products button, then you can see a list of products. Okay. Yes. So if you want to change these products like assorted coffee and sanitizer, so you can change it from your WordPress dashboard under product section. Okay. You यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, प्राइस को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं. सो आप जो भी यहाँ पे चेंज करेंगे वो लाइव साइट पर आपकी यहाँ पर विजिबल हो जाएगा. ओके. देन स्क्रॉल इट डाउन, then click on this icon. Then if you want to change the text, if you want to change the description, okay, so these are like all options are available. Then this is the image. And it's a button section, like alignment. अगर आपको बटन को मिड में अलाइन करना है, राइट में अलाइन करना है, तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस अवेलेबल मिलेंगे. बिल्कुल सिमिलर वे में आपको करना है जैसे हमने ऊपर किया है. Then get 20% off on. What Yes. if I want to add a new product? Yes, मैम, वो हम वर्डप्रेस से बताएंगे आपको कैसे करना है. मैं अभी बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है. If you want to add your new product, so going back to our WordPress dashboard and click on under section products, you can see add new button is there. Okay, so click on this add new button. Okay, so now ये आपसे पूछ रहा है कि प्रोडक्ट का नेम क्या है. लाइक मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ अभी के लिए, लाइक हर्बल टी. ओके. सो अभी यहाँ पे आपको कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है तो आप लिख सकते हैं. ओके. हर्बल टी इज देयर. देन कैटेगरीज हम यहाँ से बना देते हैं टी. Click on add new category. So now you can see a product is selected in the tea category. Then scroll it down and you can see regular price is there and selling price is there. So make sure your regular price is always like in a like आपका जो रेगुलर प्राइस है वो आपका हमेशा ज्यादा होना चाहिए. ठीक है. और सेलिंग प्राइस आपका कम होना चाहिए. ठीक है. तो 299 and 199. Then if you have a description for your product, you can write it there. Then set product image. Okay. So I'm going to search a herbal tea image. Herbal tea. Okay. Images. Then आप मैं अभी के लिए यहाँ से ले लेता हूँ कोई इमेज. Save. Okay, so click on this set product image. Then if you want to add it from your system, upload files, select files, click on this, then click on set product image. Okay. So इतना आपको करना है. टाइटल देना है आपको, कैटेगरी बनानी है, आपका प्रोडक्ट पर्टिकुलर किस कैटेगरी में आता है. देन आपको यहाँ पे जाके एक प्रोडक्ट की इमेज लगानी है. एंड इफ यू वांट टू ऐड मल्टीपल इमेज फॉर योर प्रोडक्ट, यू आल्सो कैन under product image section you can see product gallery option is there, right? So if you want to make a gallery of your product, like a collection of images, so you also can make it from this option, add product gallery images. Okay, so now you can see a publish button is there. So when I click on the publish button, then your product will be going into like आपका product website पर live हो जाएगा. Okay, publish. Yes. So now you can see product published, view product. Okay. So मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमने प्रोडक्ट को यहाँ पे लगाया है वो कहाँ पे विजिबल होगा. ठीक है. Click on all products. Page number 2. Okay.
वो आई थिंक पीछे गया। यस, ये देखिए मैम, यू कैन सी हर्बल टी प्रोडक्ट इज देयर। Yes. Okay, so if you want to add your multiple products, so you also can delete these products and add your own new products. Okay, so you can see a sale tag is there, like किसी भी यहाँ पे किसी भी okay यहाँ पे है। Okay, so sale tag means like आप यहाँ पे 299 का नॉर्मल प्राइस 299 का है, बट आप डिस्काउंट के साथ 199 का प्राइस दे रहे हैं। ओके, एंड लेटर हम ये भी बताएंगे कि ये जो करेंसी है, how to change this like from dollar to Indian currency. Okay, ठीक है। सो ये प्रोडक्ट सेक्शन हो जाएगा आपका। बेसिकली आपको वर्डप्रेस पे जाना है, प्रोडक्ट सेक्शन में जाना है, देन इफ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट, आप कितना भी प्रोडक्ट यहाँ से डाल सकते हैं। वो कॉमर्स में आपको एक पूरा आपका स्टोर बनाता है आपकी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, सो प्रोडक्ट सेक्शन आई थिंक यहाँ से कवर हो गया है। देन मूविंग डाउन, get 25% off on your first purchase. Okay, so you also can edit this content from the left section and shop now button। अगर इसे आपको लिंक करना है, सिंपली आपको यहाँ पे लिंक वाले सेक्शन पे जाना है, आपको यहाँ पे लिंक लगा देना है। ओके, and the same way for the second layout, then trending products। Okay, if you want to change the trending products, you also can change। Okay, like our best products। Okay, then scroll it down, then customer reviews, if you want to change it from testimonials। Okay, then scroll it down, and like if you have a physical shop, आपका कोई टेस्टिमोनियल है, आपके कस्टमर का रिव्यूज है, वो आप यहाँ पे कर पाएंगे चेंज। क्लिक ऑन दिस पेंसिल आइकन एंड if you want to change this image, you also can। Same way, middle section and right section। And let's suppose if you want to remove like full section, like if you want to remove this section, like featured brands, logo if some। Okay, so click on this cross icon। Okay, you can see when I hover over the cross icon, then it show delete section is there। Okay, so click on this cross, then you can see your section is completely deleted। so if you want to delete अगर आपको कोई भी सेक्शन डिलीट करना है अपनी वेबसाइट से, तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो वो सेक्शन आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, Is there an undo button? Like supposing by mistake you delete anything? अच्छा, जस्ट सेकेंड। अंडू बटन मैम आई थिंक कंट्रोल जेड यहाँ पे वर्क करता है। यस, ये देखिए जैसे मैं यहाँ पे सेक्शन पे गया, ठीक है, मैंने यहाँ से डिलीट किया, देन मैंने क्या किया, कंट्रोल जेड को प्रेस किया, सो ये वापस से यहाँ पर आ गया। ओके, Okay, great. यस, सो बेसिकली मैम ये एक के लिए ही काम करेगा। अगर आपने ये डिलीट किया है, देन आपने उसके बाद वो डिलीट कर दिया है, तो कुछ मतलब कुछ गारंटी नहीं है कि वो वापस आ जाएगा। सो आप मेक श्योर चेक करने के बाद ही डिलीट करना। ठीक है, ठीक है, तो ये कर लिया मैंने, देन मैंने यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर दिया। यस, सो अभी मैं वेबसाइट को लोड कर लेता हूँ एंड वी कैन सी लाइव चेंजेस। यस, ये देखिए ये सेक्शन हमने ऐड किया था, ज्वाइन आवर क्लासेस, देन दिस, देन बुक नाउ बटन, एंड हमने इस बटन को लिंक करा था अपने प्रोडक्ट से। सो व्हेन आई क्लिक ऑन दिस बटन, सो ये देखिए ये मुझे प्रोडक्ट्स वाले पेज पर ले आएगा। ठीक है, सो ये हमने प्रॉपर अपना होम पेज को एडिट कर लिया यहाँ से। देन आपको सेम वे में आपको जो भी पेज को एडिट करना है, सिंपली आपको वेबसाइट को लोड करना है, देन आपको पर्टिकुलर पेज पे क्लिक करना है। जैसे मैंने अबाउट पे क्लिक किया, ठीक है। ओके, सो लेट्स सपोज इफ यू वांट टू चेंज द अबाउट अस पेज, द कंटेंट ऑफ अबाउट अस पेज, सो सेम वे में करना है आपको जैसे हमने होम पेज पे किया था। सो क्लिक ऑन दिस एडिट विद एलिमेंटर। Yes, so in place of about us, if you want to change the text, you also can। Okay,
सो सभी पेजेस के लिए ये सेम रहेगा आपका, जैसे हमने होम का किया है एग्जैक्टली सेम। ठीक है, सो आई थिंक आज की क्लास के लिए इतना काफी है। सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। हम अभी जी Ayush, I want to ask you one more question. Now we हम्म added this new product, herbal tea, and when I saw it shows me only on the our products page. What if I want to move it to the events, the main page, like the home page? okay, just a second, going to the product section and okay, yes. So ma'am, you can see a star button is there. You can see hand picked red chilies, pulses from organic farm, Yes. right? So if you want to show your product on a home page, so you have to enable this star button. Okay, you can see no, and when I enable this star button, it reloads the page and then it is selected. So I'm now if I am loading my website, so I think that's the way. Okay, new site and herbal tea, just a second. Featured product assorted, hand sanitizer, right? Cookie, best products. Okay, just a second, I'm going to disable some of products from the star icon. Okay, so remove this. Then remove this one. Tea, okay, groceries. Okay, so I think I created like a new category, so I think that's the reason it like doesn't show the product. So if I put the product in a groceries category, just a second. Right side corner. Okay, yes. If I put this in groceries category, then update and remove some. Okay, so now ma'am, you can see third one, herbal tea. Yes, yes. Okay, so if you want to add your product in your home page, so make sure you want to click on this star icon. Okay. Any more So questions, free, please, about yes. this? किसी और की कोई और सवाल हैं? बट आज के बाद प्लीज अगली क्लास तक आप अपनी वेबसाइट पर ये काम जरूर कर लें, नहीं तो आप भूल जाएंगे और ये लर्निंग्स आपके फिर काम नहीं आएंगी। आप अपनी डोमेन होस्टिंग, एक डमी डोमेन होस्टिंग ले लें, सस्ती ले लें, आप महंगी ले लें, वो आप देख लें। यू प्लीज बाय वन डोमेन एंड होस्टिंग and try using these tools. This skill can be beneficial for you for your lifetime in case once you could do it, because Ayush is there, we are there. You can connect us in case you stuck somewhere, but please go through once so that all the obstacles, technical obstacles, should be removed from your pathway, and you go through this learning and you would be able to create and design your website. So please do this exercise. This is strongly recommended from our side. And in the next class, Ayush, what we are going to cover? अगली क्लास में क्या करने वाले हैं हम? Page customizations. Ayush? Okay, Yeah. okay. So I think my mic is turned off. Just a second. Ayush, क्या Yes. करने वाले हैं हम अगली Yes, क्लास sir. में? We are going to cover like if you want to add a new page into your website, and if you want to appear the page on your home screen, like in a primary menu, in place of this, like events, all products, about. So I'm going to explain this one, and I'm also going to like हम एक वहां से वो भी कवर करेंगे कि अगर आपको
अपना खुद का हेडर और फुटर बनाना है, वो आप कैसे बनाएंगे प्लगइन से? ठीक है। ठीक है, and then after that देन सर एक टॉपिक और हम कवर कर लेंगे वहां से, आपको पेमेंट गेटवे कैसे लगाना है अपने प्रोडक्ट्स पे। okay, payment gateway, email integration, that is email integration, payment gateway, blogging page. These three topics more will be covered in this class. And after that, in next week, we are going to start search engine optimization. How you can make your website popular at search engines, how you can register it for there. So that will be started. So you have to do a lot of work. So please do simultaneously together with the class so that you can create your infrastructure efficiently. So that's it. Any more question please for today, or should we close this class? कोई और प्रश्न है या यही क्लास को आज बंद करें? कोई प्रश्न नहीं है, बहुत शांति है. Faris, do you have any question? No, I'm okay. Great, thank you. If you are Thank okay, you. then everyone is okay. And Deepu is there. Deepu, is there any question, please? You are a Sir, I didn't. yes, please. I didn't. Sir, I didn't get that login of login. I mean, recording section of Facebook marketing. Facebook marketing is a different task, Buddha. So, what about today's class? Are you through this? Yes, sir. Today is Great. done. And now, for Facebook, whatever is the problem, you put in the chat box or put in the WhatsApp group, and we will do the link for that. So, have you Sure, sir. downloaded mobile application, Buddha? Yes, sir. I did. And did you get the link over there? Video link? No, I didn't get that link. I am in Prime batch 4, and in app, its batch code is GRF BSN19. So in that, you are in Prime batch. yes, sir. Yes, Prime batch 4. Okay, so I was not aware that you are in Prime batch 4. Okay, so let's connect separately for that. You just give me a call and let's Sure. summarize the thing or whatever is the problem, so we can give the solution for that. Please give me, either you write in the WhatsApp or you can call me after that. Okay? Sure, thank Yes, you, sir. please. और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं, तो आप सबसे गुजारिश है, प्लीज आप अपना वेबसाइट जल्दी तैयार करते जाओ और फिर हम आगे SEO की तरफ बढ़ेंगे. ये और स्ट्रक्चर होने वाला है कोर्स. इसी के साथ आज की क्लास यहीं एंड करेंगे. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. गुड नाइट, बाय बाय. Thank you. Ayush. Okay, thank you. Good night. Okay, sir. Thank you. Good night, ji. Thank you. Okay.